A very good morning, children. How are you all? All are fine? All are good at home? Children, you are doing studies also? आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हो ना बच्चों? So let's start today's class. Today is our mathematics class, children. And our today's topic is skip counting by 10. आज हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? आज हम skip counting by 10 रीड करेंगे और उससे पहले हम लोग टेबल्स रीड करेंगे. So let's bring out your mathematics notebook. Firstly, read the table with me. As you have already written it, आप लोग लिख चुके हैं ना टेबल 10 का. तो पहले हम लोग रीडिंग करेंगे. Read the table with me. 10 zeros are 0. 10 ones are 10. 10 twos are 20. 10 threes are 30. 10 fours are 40. 10 fives are 50. 10 sixes are 60. 10 sevens are 70. 10 eights are 80. 10 nines are 90. 10 tens are 100. बच्चों आपने भी रीडिंग की मेरे साथ टेबल की. Just read the table carefully at home. And now we are going to start our today's topic. How many children are there? There are 22 children standing in a queue. एक लाइन बना के 22 students खड़े हुए हैं. And teacher will give this ball to the student standing on the 10th place. टीचर उस बच्चे को बॉल देगी जो कि 10th प्लेस पर खड़ा है. That means we need to skip for 10 times. 10 times skip करके हम कौन से प्लेस पर पहुंचेंगे? We will reach the 10th place. So let's see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. We skipped for 10 times and reached the 10th place. And we reached the 10th child. जो बच्चा 10th पोर्शन पे 10th प्लेस पे 10th पोजीशन पर खड़ा है, he will get the ball. टीचर से बॉल देगी because today is the turn of the 10th student. आज 10th स्टूडेंट की टर्न है. इसके लिए टीचर ने 10 टाइम्स स्किप किया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 टाइम्स स्किप करने पर 10th प्लेस पर हमें जो चाइल्ड मिला हमने उसे बॉल दे दी. Now let's start the skipping again. Now we will reach another 10th place student. अब दूसरा बच्चा 10th प्लेस पर कौन सा खड़ा है, अब हम उस तक पहुंचेंगे. Let's start the counting again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब 10th प्लेस पर जो स्टूडेंट है, we have reached the 10th place again, and this is the student standing on the 20th position. The student is standing on the 20th position. We skipped again for the 10 times. हमने फिर से 10 times skip किए और हम 20th position पर जो बच्चा खड़ा है, जो स्टूडेंट खड़ा है, हमने उसे बॉल दे दी. Is that clear to you? ये चीज आप लोगों को समझ में आई?
हमने क्या किया था, 10th प्लेस पर जो स्टूडेंट खड़ा था उसके आगे से हमने स्किपिंग स्टार्ट करी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और नेक्स्ट 10th प्लेस पर जो बच्चा खड़ा है वी गिव द बॉल टू दैट चाइल्ड और उसकी पोजीशन नंबर कौन सा है, द पोजीशन नंबर इज 20. So we have reached the 20th child. So children, it is also another example of skip counting. तो इस तरह से हमने 10 places से skip करके 10 times skip करके 10th place choose किया। हमने 10 times skip करके हम लोग 10th place पर पहुंचते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को स्किप काउंटिंग समझ में आई। हमारी टेबल्स भी इसी तरह से लिखी गई हैं। Now let's start our today's exercise. So children, open your mathematics notebook and now we are going to start our today's topic, skip counting by 10. Firstly, write down today's date. आज की डेट है 25 February 2021. Write down the CA also and the day is Thursday. The topic is write skip counting by 10. Let's read the numbers 15, 25, 35, 45 and then 45 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? Let's count the numbers on the fingers quickly. So children, these are 10 fingers and now we will count on the fingers after 45. 45 के आगे से हम अपने fingers पर count करेंगे and we will reach the 10th place. 45 के आगे से count करो बच्चों। 50, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. So we reached the 10th place. This is the 10th finger. We reached the 10th place. We skipped for 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and we get the number 55. हमें कौन सा नंबर मिला? 55, 55. So let's just write down the number here. 55, 55. Now let's count the numbers again on the fingers. 55 के आगे से count करें बच्चों. Let's count again. 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. So the number will be 65, 65. 10 times skipping करने के बाद हमें कौन सा नंबर मिला बच्चों? We get the number 65, 65. So let's write down here 65. Now let's count again. 65 के आगे से counting करेंगे. So children, count on your fingers. बच्चों चलो सभी अपनी fingers पर count करो 65 के आगे से. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75. So the next number will be
75, 75. So first line is complete. First question is complete. And it is clear to you now. अब आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई है ना? Let's start question number B. Let's read the numbers 28, 38, 48, 58, and which number will come after 58? Let's count on your fingers quickly. 58 के आगे से काउंट करें बच्चों. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68. So which number will come after 58? The number 68, 68 will come. Now let's write down another number. 68 के आगे कौन सा नंबर आएगा? Children, let's count on your fingers quickly. 68 के आगे से आप लोग अपनी fingers पर count करो. Which number will come, children? So children, let's count on your fingers. 68 के आगे से counting start करें. 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. So the number will be 78. On the 10th finger, we get the number 78. So let's write down on the place. We get the number 78. 10 times skipping के बाद हमें कौन सा नंबर मिला बच्चों? The number is 7878. So let's count again on the fingers. बच्चों 78 के आगे से counting start करें. Let's count it quickly. Let's count again. 78 के बाद कौन सा नंबर आएगा? जल्दी जल्दी बताओ. Which number we skip firstly? 78 के बाद हम कौन सा नंबर skip करेंगे? 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. The number will be 8888 on the 10th place. 10th place पर हमें कौन सा नंबर मिला बच्चों? This is 88. So let's write down here 8888. So this number is clear to you now. Write down here quickly. And now we are going to start the counting again. Question number B is clear now. So let's start question number C. C के numbers read करें बच्चों अब हम. 4040, 50, 60, 70 और 70 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? Count on your fingers quickly. 70 के आगे से counting start करें. 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80. So the number will be 8080. We get the number 80. So let's write down here quickly. जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में भी लिखना. And do your work neat and clean. We have jumped for 10 times. Now let's again start the skip counting. We will count again till the 10th place. 10th place तक दोबारा से counting start करें बच्चों. चलो 80 के आगे से counting start करो. Let's count on your fingers quickly. 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 90,
90. The number is 90. अब हम 90 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे बच्चों. So let's count the numbers on your fingers quickly. 90 के बाद 10th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? जल्दी जल्दी अपनी फिंगर्स पर काउंट करो और बताओ मुझे 90 के बाद 10th प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा? Let's count it quickly. So children, let's count after 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 and 100. So after skipping 10 times we get the number 100. So just write down 100, 100. Question number C is clear now. Question number C आपको समझ में आ गया है. Now let's start question number D. अब हम question number D करेंगे. Just read the numbers and give the answer. 37, 37, 47, 57, 67. And now which number will come after 67? 67 के बाद कौन सा नंबर आएगा बच्चों? Let's count on the fingers for 10 times. 67 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करें 10 टाइम्स के लिए. 67 के बाद 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 and then 77. So the next number will be 77. 67 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 77. And which number will come after 77? और 77 के बाद कौन सा नंबर आएगा? Let's count again. 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. So the next number will be 87. Is that clear to you children? इतनी चीजें आप लोगों को समझ में आई? तो 87 के आगे से काउंटिंग स्टार्ट करें. Let's count it again. Count on your fingers quickly. So children, let's count the numbers after 87 on the fingers for the 10th place till the 10th place. 87 से के आगे से हम skipping start करें. 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97. So the next number will be 77. We get this number on the 10th place. We skipped for the 10 times. So this thing is clear to you now. So let's write down the number 97. So it was the skip counting by 10. Skip counting by 10 is clear to you now. So just write down these numbers. Write down this work in neat and clean manner in your mathematics notebook. Do it properly and do your studies also. Take care children.